Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik. Let's move towards our sixth problem, that is generalize owner. Remember one thing, owner जब कभी भी बिजनेस शुरू करता we need to write it as capital account, right? और हमारे बिजनेस में आया क्या? कैश. So what we need to consider here? Debit what comes in. बिजनेस में क्या आ रहा? कैश. उसको हम डेबिट कर डालेंगे. So in the journal entry, cash account data to capital account. क्यों? Owner is a giver. So whenever owner is a giver, we need to consider it as capital account. Being business started with cash. Now let us see the next journal entry. Maximum जने एक गलती करते हैं, right? They will write purchases account data to cash account. No, it is completely wrong because purchases is only used for goods. और गुड्स बोलते किसको? द थिंग्स विच आर परचेज विद द ओनली इंटेंशन टू सेल. हर वो चीज जो खरीदी जाती बेचने के इरादे से, मगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करने के इरादे से लिए, राइट? सो हियर व्हाट वी नीड टू राइट? कंप्यूटर. क्यों? बिकॉज कंप्यूटर विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन. बिजनेस में आया क्या? हमारे कंप्यूटर. और इट इज अंडरस्टूड दैट आप पैसे दे के कंप्यूटर खरीदे. अगर उधार पे खरीदते थे तो उधर मेंशन रहता था आपके सप्लायर का नाम, जिसके भी पास से आप उधार पे खरीदे, राइट? सो इट इज अंडरस्टूड दैट वी हैव पेड कैश एंड परचेज फर्नीचर. सो हमारे बिजनेस में से गया क्या? कैश. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो अब इधर जर्नल एंट्री क्या बनी? कंप्यूटर अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट बीइंग कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज. Now let us see the next transaction, that is purchase goods for cash rupees 6,000. आप क्या करें? गुड्स खरीदे. कैसा? उधार पे नहीं, पैसे दे के गुड्स खरीदे आप. So what we need to write here? Purchases account data. कई को बोले तो हम गुड्स खरीदे, बिजनेस में हमारे गुड्स आते, राइट? डेबिट व्हाट कम्स इन. बिजनेस में क्या आ रहा? गुड्स. इंस्टेड ऑफ गुड्स वी नीड टू राइट परचेजेस. और हमारे बिजनेस में से गया क्या? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश जा रहा हमारे बिजनेस में से, राइट? सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन? परचेजेस अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम महेश रुपीस 8,000. Here clearly it is telling that we have purchased the goods from Mahesh on credit. मतलब उधार पे महेश के पास से 8,000 के गुड्स आप खरीदे. के पास से खरीदे आप, तो महेश इज अ गिवर. So according to the rule of personal account, credit the giver. तो महेश को क्या करना है? क्रेडिट. और हमारे बिजनेस में आया क्या? जब कभी भी आप गुड्स खरीदेंगे तो इंस्टेड ऑफ गुड्स वी नीड टू राइट परचेजेस to Mahesh account being goods purchased from Mahesh on credit. This will be the journal entry for that transaction. Now let us see the next transaction. Purchase goods for and paid by check. इसका मतलब क्या है? आप गुड्स खरीदे, कैश की बजाय आप दे रहे चेक. तो हमारे बिजनेस में से गया क्या? चेक. रिमेंबर वन थिंग, जब कभी भी बिजनेस में चेक आया तो हम बैंक लिखते, चेक गया तो भी हम बैंक लिखते. तो इंस्टेड ऑफ चेक वी नीड टू राइट बैंक, राइट? तो हम क्या करें? हम खरीदे क्या? गुड्स. गुड्स खरीदे तो हम परचेजेस लिखते, और हमारे बिजनेस में से गया क्या? चेक.
चेक गया तो हम क्या लिखेंगे, बैंक. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेट आर टू बैंक अकाउंट, being goods purchased and paid by check. Now let us see the next transaction, that is sold goods for cash. पैसे लेके आप goods बेच दिए, तो बिजनेस में आ रहा कैश, बिजनेस में से गए क्या, गुड्स. डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट में क्या आ गया, कैश अकाउंट, और क्रेडिट में क्या आया, सेल्स. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस में से गए क्या, गुड्स, आप क्या करें, बेचे. Sold for cash will be the narration for this journal entry. Now let us see the last transaction, that is a bit complicated, मगर easy है if we understand that. Let us see goods sold of which, जिसमें से 8,000 कैश मिला आपको और चेक 7,000 का मिला, राइट. गुड्स बेचे आप, आपके बिजनेस में आया क्या, कैश आया, कितना, 8,000. तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेटा 8,000, और क्या आया बिजनेस में, चेक आया. चेक आया तो हम क्या लिखते, बैंक. फिर और एक डेबिट मिल गया हमको, बैंक अकाउंट डेटा कितना, 7,000. टू, बिजनेस में से गए क्या, गुड्स, गुड्स गए तो हम क्या लिखते, सेल्स. कितने के गुड्स गए, 15,000 के. We need to write it as 15,000, right? So what will be the journal entry, cash account data 8,000, bank account data 7,000, to sales account 15,000, being goods sold paid by cash and check. इसका नरेशन है. अब नरेशन को आप और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसा, let us see. Narration is nothing but explanation of debit and credit, and payment is partially received in cash and check, right? So with this transaction we have completed our sixth problem. Let us complete the seventh problem in our next video.